morning. Yeah, good morning, Aish. Yeah, very good morning. And this is the last session for Theory of Computation. इस सेशन के बाद हम मंडे से कंपाइलर डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट सेशन में हम अनडिसाइडेबल एंड डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स एंड लैंग्वेजेस को कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए, ठीक है. ट्यूरिंग मशीन, आयुष, ओके. शाहिन, गुड मॉर्निंग. Anish, good morning. Okay. Except Turing machine, all other automata are machines, halts all the time. But एक मशीन है जो ट्यूरिंग मशीन, इनके लिए दो पॉसिबिलिटीज होगा, halting and नॉन halting. halting हो सकता है वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए, बट नॉन halting होगा सिर्फ इनवैलिड स्ट्रिंग के लिए, ठीक है. आज इस सेशन में कोशिश करेंगे वो भी हाल्टिंग नॉन हाल्टिंग केसेस क्या क्या है, ठीक है. या नागेश्वर, गुड मॉर्निंग. सो स्टार्ट कर लेते विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो इस सेशन में हम डिसीजन प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे और लैंग्वेजेस को भी, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और वो भी कवर करेंगे, एंड सम ऑफ द पीवाईक्यूज असाइनमेंट मिलेगा अगर टाइम नहीं होगा तो, ठीक है. फर्स्ट स्टार्ट कर लेते लैंग्वेज और प्रॉब्लम. कितने टाइप की है लैंग्वेज और प्रॉब्लम? सी लैंग्वेज कैन बी डिसाइडेबल, इवन प्रॉब्लम कैन बी डिसाइडेबल. देन व्हाट इज द डिफरेंस? आई शुड प्रॉब्लम. लास्ट सेशन में 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया है. एक प्रॉब्लम है और एक लैंग्वेज है डिसाइडेबल. दूसरा प्रॉब्लम है आर ही बट नॉट रिकर्सिव. थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज और प्रॉब्लम इज नॉन आरी और नॉट आरी. Is it clear? So look at here, I did not use the word undecidable even the last session. So these two problems are undecidable problems. If any problem is RE but not recursive, that means you have a Turing machine but you don't have halting Turing machine. इस type problem को हम RE but not recursive कहते हैं, और उसके लिए Turing machine नहीं है, उस problem को हम not RE कहते हैं. ये दोनों problems undecidable problems है. क्यों? They are not recursive, they are not decidable, right? This problem is decidable and also called as recursive language. यहां पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए वर्ड्स कैसे यूज करना है. और ये जो डिसाइडेबल वर्ड है इनका सिनोनिम है रिकर्सिव, effectively enumerable, right? halting program exist, halting Turing machine exist. ये क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए आपके पास. आर ई बट नॉट रिकर्सिव, इनका नाम क्या है? देखो ये है आर ई तो है, राइट? दैट मीन्स सेमी डिसाइडेबल तो है, बट ये अनडिसाइडेबल है. यूडी, एस डी बट यूडी, राइट? ये दोनों एस डी है बट ये एस डी है और यूडी भी है. तो ये दोनों मिलके इनकी सिनोनिम बनेगा. सिर्फ एस डी ठीक है बट वो सिनोनिम नहीं है. ये दोनों एस डी है बट इनका दूसरा नाम है एस डी बट यूडी और एस डी एंड यूडी. सिंपली एस डी यूडी, बिल्कुल सही है. नॉट आर ई मतलब नॉट एस डी, दूसरा नाम क्या है? नॉट एस डी. क्लियर? ये सिनोनिम्स कह रहा हूं मैं, सिनोनिम्स मतलब यू कैन ऑल्सो यूज
not SD in place of not RE. Okay, is it clear? कलेक्ट टेबल, छोटा टेबल भी बनाया. ट्यूरिंग मशीन, ऑल्टरिंग ट्यूरिंग मशीन किस टाइप की लैंग्वेज के लिए होगा? नहीं होगा. रेडी? फर्स्ट टॉपिक है डिसीजन प्रॉपर्टीज. डिसीजन प्रॉपर्टीज टेबल. इस टेबल को आप याद रख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं एल्गोरिथम्स क्या क्या है, बट इस फास्ट ट्रैक में सिर्फ हम टेबल देखेंगे, एल्गोरिथम्स नहीं देखेंगे. डिसीजन प्रॉपर्टीज टेबल. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है इस टेबल से, इसलिए इसको पढ़ना कंपलसरी है. ठीक है, ये जो प्रॉब्लम का नाम है, तो ये ऑल्टिंग प्रॉब्लम, ये मेंबरशिप है, प्रॉब्लम का नाम है, लैंग्वेज का नाम नहीं है, प्रॉब्लम का नाम है. मेंबरशिप, एम्प्टीनेस, finiteness, totality, equivalence. फेमस प्रॉब्लम्स, इसलिए एक टेबल बना रहा है इसके लिए. डिसजॉइंट, सेट कंटेनमेंट और सेट इंक्लूसिव. नो अनिश, तो देखो यार, इनको दिमाग नहीं चल रहा होगा. इतना क्लियरली बनाया कल टेबल, नॉट आ रही मतलब यूडी नहीं कहना, ये दोनों यूडी है, दोनों मिलके यूडी होगा, एक मिलके नहीं. ठीक है, सिर्फ ये यूडी है तो ये कौन है? ये डिसाइडेबल है क्या? ये भी यूडी है. तो इसलिए यूडी सिनोनिम नहीं होता, इनको इक्वल नहीं बोलना है. नॉट आर ई इज यूडी, बट यूडी नीड नॉट बी आर ई, नीड नॉट बी नॉट आ रही, नीड नॉट बी नॉट आ रही. तो बात समझना, बहुत लोग यहां कंफ्यूजन हो जाता. राइट, यू शुड नो एग्जैक्टली नॉट आ रही इज यूडी, बट यूडी डजंट मीन नॉट आ रही. यूडी कैन बी आ रही बट नॉट रिकर्सिव. यूडी मे हैव द ट्यूरिंग मशीन. मैं कल से कह रहा था, लास्ट सेशन से कह रहा था, प्लीज डू नॉट use the UD word at all. If you use the UD word, you will confuse it completely. These two types of problems, these two types of languages, both are undecidable. Okay, so please look at the comment, correct your comment. Okay, if you don't like UD, please don't use it. For finite automata concepts like regular languages, regular expressions, regular grammars, for all of them, just I have written finite automata, but it's not exactly finite automata for all the types. Okay, even DPDA, DCFL column, PDA column, HTM column, Turing machine column, and LBA you may use here if you want it, because for both of them you will have the same properties. Okay, so for regular languages you apply this column, for DCFLs you apply this column, for CFLs you apply this column, for recursive languages, even context sensitive, you can apply this column, and for RELs, Turing machine, you can apply this column. Okay, yeah. Oh, again, see Prabal,
Do you want to write that? REL, don't say UD. RE need not be UD. Again, the mistake. These two are RE. This is also RE, but it is not UD. So don't say RE is UD. RE but not recursive is UD. Okay. So be careful when you use the statements. And I am telling you, don't use such words at all. Not RE is UD, but UD may not be RE, may not be not RE, may or may not be not RE. Very sorry, I forgot to use this. Just wait. Note 1, not RE is UD. Note 2, UD need not be not RE. Similarly, RE, please don't say UD. RE need not be UD, even need not be D. Fourth, RE need not be decidable because it has two types. Fifth, RE but not recursive. ये जो है, this is definitely UD, but UD again need not be this one. Okay, is means implies, equivalent, synonym, both are different words, right? Equivalent, synonym we cannot use here. Is means this you can call it as UD, but UD you cannot call it as this one. Okay, implies, just implies, one direction. Okay, use the statements properly. Okay, any confusion, have a clarity. Sixth, decidable, you can say RE, but RE need not be decidable. That already have written here. Decidable is RE, but RE need not be decidable. So be careful when you use the statements. Also called as different, is different. Okay, and that is why the people try to confuse, when they try to answer any problem, they cannot use these words properly. Why? Because they don't have a clarity when we say UD, when we say D, when we say RE, when we say semi-decidable. You should have this word game. You keep these words cleverly and clearly. Okay? अगर उसमें clarity होगा ना तो confusion कम होता है उसमें. Okay, whatever. Just practice it. It takes time, but practice it. Now, first you should know what is this problem. Okay, what is halting problem, what is membership, what is finiteness. This halting problem, you can create 5 different problems. That means halting problem for regular languages, finite element is different, halting problem for DPD is different, halting problem for PDA is different, and each column you apply clearly. So here I am trying to discuss, it means that I am applying halting problem for finite element. Okay. So remember, if I use the word D means decidable, so I am using D. Look at that, how long it is decidable. The first 2 problems decidable up to HTM, and next 2 problems decidable up to PDA, and next 2 problems decidable up to DCFL. So easy to remember this table also. Remaining, what are they? They are undecidable, but in undecidable there are 2 types. Which one you cannot answer from this table, you need to go beyond this table. Okay, this is UD, but which UD? There are 2 types of undecidable problems. What are they? RE but not recursive, not RE. What is this? RE but not recursive or not RE? No clarity here. So you should learn for that. Okay. In the exam, if they ask just undecidable or not, so easy to answer from this table. अगर क्वेश्चन में RE बट नॉट रिकर्सिव भी है तो थोड़ा और काम करना होगा आपको. Okay, so you may remember this table, and anybody
knows exact definition. So I'm going to discuss for membership and halting what exactly these two UDs. Are they not RE, or they RE but not recursive? What are they exactly? I'm going to discuss the same concept. You may apply for all of the remaining if you have a time. Okay. So in the exam, what kind of questions they may ask? Which of the following problem is decidable for Turing machine? If you look at all these problems are undecidable. It's so easy to answer, and any question any problem comes from this table, just say they are undecidable. Okay. Ankit, if you want to design minimum NFA, dead state never be required. If you are designing NFA, it's your choice. If you are not worried about the number of states, you can keep the dead state, because that give you clarity. Okay. When you design NFA, we will always avoid dead state, unnecessary states. Only we focus on the valid members. Okay. Okay. Let's start halting problem. Okay. Halting problem. The halting problem, what is given to you is machine is given machine halts on given W. Which machine, which W, we don't know. It's in general question here. It is any machine I can give, any W I can give. Do you have an algorithm to check is it halting or not? So answer, this is a problem, right? So now this machine, when I apply for the first column, this machine can be finite automata, DFA or NFA at any finite automata, and W could be any string from the given sigma star. Right? Given sigma, you will have a sigma star. This W belongs to sigma star. Now, do you have algorithm to check will it halt or not halt? Now tell me, if you apply for finite automata, when you apply this problem slightly changes. Is given finite automata, could be DFA or NFA, anybody, halts on given W, could be epsilon, could be any string. Now question changed. Now tell me, for finite automata, for DPDA, for PDA, for HTM, why this problem is decidable? Anyone? किसी को पता क्या? सिर्फ या फाइनाइट, ये सब सेम है. यहां पर DPDA लिखना और बाकी सारे you can use the same. For PDA also just change the machine only, and for HTM and LBM also you can use the same line. So why these problems, these four halting problems, why they are decidable? Anyone? What algorithm you have? Anyone guess? Because this is actually trivial question. These machines, they do not have non-halting case. See, this problem is given M. Is M halts on W? Of course, given all these things not required to write. This is the problem. How many inputs are given to you? M is given and W is given. And what should be your answer? Either yes or no. Every problem will give you two answers, yes or no. Yes means what? M halts on W. No means what? M never halts or doesn't halt. Now tell me, if this question asked for finite automata, DPDA, PDA, LBA, HTM, do you get this case? This never halt case only happens for what? It's not required for the gate unnecessarily. Why are you wasting time, Ankit? Arden's theorem and Kleene theorem, it will waste your time to convert given machine to regular expression. Better use a state elimination technique.
Directly you do it. Why do you apply algorithms in the exam? Never. Okay, this case never happens. That means you give me any finite parameter, my answer is yes only. You give me any DPDA, my answer is yes only. You give me any PDA, my answer is yes only. And it's so easy. This is a trivial question in the world. For this, algorithm is a definition, right? I am telling you, मैं बता रहा हूं आपको, मैं halting Turing machine दे रहा हूं, तो halting Turing machine दिया है और string भी दे रहा हूं. तो क्वेश्चन, is that HTM halts on W? अरे डेफिनेशन ऑफ HTM इज हमेशा हाल्ट होता है, तो ये क्वेश्चन क्या है? एस बोलना चाहिए. इनके लिए एल्गोरिथम जरूरत क्या? तो ट्रिवियल, यूजिंग डेफिनेशन यू कैन से एस. You no need to look at what is this HTM, how it runs. Not required, because the input is clear. Okay. So this problem, halting problem, that is the reason finite automata, DPDA, PDA, even LBA, HTM, these machines always halts. Doesn't matter what input you give it. That is the reason halting problem is decidable. Okay. Oh, Ankita, I'm sorry because I cannot waste the time. Okay. And now Turing machine. Now apply this for the Turing machine. Now when you apply this Turing machine, what happens? Input is TM and string could be epsilon or A or B or WA, could be anything, depends on sigma. So let's say this is some W, it's some string that you want to run on the Turing machine. Now this question changing slightly, is given TM halts on W. Tell me S. No, who will have a logic? S means M halts on a W. The Turing machine, when it halts on W, when will it is possible to halt? You tell me, when will it be possible to halt? अगर आपके पास लॉजिक है तभी halt होगा. देखो मैं 2 + 3 पूछा है, अगर आंसर नहीं पता तो आपकी दिमाग कंप्यूट करता रहेगा इन्फिनेटली. अगर आंसर पता है तो आप 5 बताओगे, स्टॉप करोगे. तो halt होगा तभी आपके पास लॉजिक है. अगर लॉजिक नहीं है तो halt इम्पॉसिबल. तो यस, ये ट्यूरिंग मशीन ऑल्सो ऑन W. अगर ट्यूरिंग मशीन W में halt हुआ है, वो वैलिड है इनवैलिड है उससे मतलब नहीं, वो एक्सेप्ट भी हो सकता, रिजेक्ट भी हो सकता. तो यहां लॉजिक एग्जिस्ट. halt होने के लिए लॉजिक है और नो. और देखो यहां पर TM नेवर halts, डजंट halt. When is that possible? अगर कोई भी मशीन halt नहीं होता और उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है. क्यों? अगर ये halt नहीं हो रहा है तो आप उनके पास जाना होगा ये नेवर halt आइडेंटिफाई करने के लिए. मतलब आपकी एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम नहीं बोलते हम, आपकी जो प्रोग्राम है वो भी halt नहीं होता है. तो ये इनके लिए लॉजिक नहीं होता. कैसे पता लॉजिक नॉट एग्जिस्ट? क्यों? When the TM never halts, it's impossible to identify why it never halts. There is no way to detect that loop exists in the Turing machine. Loop means that never halts case. Okay. Now look at S has the logic, no is not having a logic. Then what is this problem? This problem, is it decidable? If it is decidable, both should have a logic. If it is RE but not recursive, then this will have a logic, this will not have a logic. If it is not RE, don't look at here. If it is not RE, this will not have a logic. This may or may not, we don't care. This will not have a logic. So 3 things are there in the world. What are they? D, semi-decidable. SDUD means RE but not recursive. Another one is not REL. Okay, NR. Just remember, NR means not REL. I'm using just short names. Not REL. This is RE but not recursive. Another name. Another name. This is just recursive or decidable. Right. What is the definition? If it is D, yes and no, problem for problem, okay, both will have a logic. Logic exists for both of them. Okay? And if it is SDUD, yes and no, who will have a logic?
S will have a logic, we don't have a logic. Cross means we don't have a logic. NR means yes, we don't have a logic. No logic may or may not exist. Question mark means may or may not exist. X means, see, tick means exist. Cross means not exist. Question mark means may or may not. May exist or may not exist. We don't know. That is the meaning. Depends on the particular problem. Is it clear? अब यहां जाके देखना, ये इस प्रॉब्लम में S के लिए लॉजिक है, क्यों ट्यूरिंग मशीन हाल्ट होता है W पे, हमको नहीं पता, बट अगर W दिया है वो वैलिड स्ट्रिंग है और इनवैलिड भी स्ट्रिंग है, हमको मतलब नहीं, तो TM हाल्ट हो गया W में, मतलब लॉजिक है इनके पास. अगर W में हाल्ट नहीं हो रहा है, वो TM एंटर्ड इनटू इनफिनाइट लूप, उसको हम बोलते हैं लॉजिक नॉट एग्जिस्ट. तो यस के लिए लॉजिक है, नो के लिए लॉजिक नहीं है, कि नो मतलब ये इनफिनाइट लूप का कॉन्सेप्ट है. तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम है अनडिसाइडेबल तो है, बट विच अनडिसाइडेबल? SDUD. तो यहां पर इस टेबल में आप फिल कर सकते हैं ये UD एग्जैक्टली क्या है. ये जो UD दिख रहा है यहां पर, ये है, ये जो UD है SDUD एक्चुअल नेम. बट ये कॉन्सेप्ट के बाद ही समझ में आता विच UD, इज इट नॉट RE और SDUD. तो क्लियरली आपको डेफिनेशन सही अप्लाई करने के बाद समझ में आएगा. एग्जाम में मोस्टली UD क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आया नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा. ये दोनों के लिए, स्पेशली ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो विच UD इट इज इट NR और SDUD, बिकॉज बोथ आर UD ओनली. ओके, इफ यू लुक एट दिस, these both are actually UD. So you should know exactly which UD it is. Saying UD not enough, because in the exam UD but semi-decidable, UD but not semi-decidable. So they may ask one step further. Okay, ये हो गया. अब चलते मेंबरशिप. मेंबरशिप मैं एल्गोरिथम का नाम बताऊंगा, बट अभी कवर नहीं करूंगा एल्गोरिथम को. ठीक है, मेंबरशिप प्रॉब्लम. मेंबरशिप मतलब क्या है? इज M accepts given W, is given M accepts given W. What is the difference? Exactly, CYK, not CYCH. CYK algorithm. Okay, not for all the languages, only for up to CFS. What is the difference between, let me tell you, many people, one more issue happens here. Halt. What else we have? Halt. Does not halt. Accept. Reject. Loop. So these words, you should know exactly how the Turing machine behaves. Can somebody tell me what do you mean by halt? Will it halt at final or non-final? Suppose machine halts, that's it. I know that machine is halting. Where it can halt? At final or non-final? So halt means it may halt at final or non-final. We don't care. Halting is required. Never halt means it's just a loop that never halts. Does not halt means never halt. It will not at final, it will not halt at final, it will not even halt at non-final. The Turing machine is running forever. So look at these two differences. Halt, it may accept or reject. We don't know, because definitely it halts, but it may accept or it may reject. So here these two correspond to halt, because this halts at final, even this also halts, but at non-final. This is exactly same as does not halt. This is exactly same as does not halt. Okay, so when you use these words,
halt doesn't mean accept. Remember, these two are actually halts. The accept means valid string is going to halt at final. Reject means invalid string will halt at non-final. Loop means for invalid string it might be entering into infinite loop. That means it never halts. So this is happens for valid string. This too happens for invalid strings. So some people want to know, so exactly when this happens. This happens for valid, that is W belongs to L, and this too happens W not belongs to L, that happens for invalid. Everybody, it's just a definition, but you should know exactly what do you mean by doesn't halt, what do you mean by halt, and what do you mean by accept, what do you mean by reject, what do you mean by loop or never halt. Clear? You know, it's just definition of the words. So do not have any confusion over these words, because I used to do the same mistakes. Like when they ask halt, I used to do accept. That's wrong, right? Now they are asking about acceptance. Previously they were asking about halt. Halt means wherever it halts doesn't matter. Is it halting or not? Final or non-final? Accept means halting at final. So now we don't look at halting at non-final. So this is the main difference. What is the halting problem? What is the membership problem? Just one word different. Accepting is replaced here. What do you mean by this? Suppose M is given as an input, W is given as an input. Now the same question we are asking is W belongs to L of M. It means is that M accepting W or not? Or is that W belongs to language represented by M? So both are same. You can also replace this word as is W belongs to L of M. In the exam, simply they may ask this one. W is a string, M is a machine. Now is W belongs to L of M. It means that is given M accepting given string. Okay. What do you mean by S? What do you mean by no? S means M accepts. M accepts W. No means M does not accept. Does not accept means what? May reject or may go to loop, depends on the machine. If it is finite data, we don't have infinite loop concept. Now tell me which by definition again you can apply. For finite automata, DPDA, PDA, HTM, even LBA, for every valid string they halt at final, every invalid string they halt at non-final. So when it is not accepting W, so we have a common logic for all of them. Even definition is very clear, like for W belongs to L, halts at final, very clear logic. Of course you may write explicit algorithm for this three. This three there is a CYK algorithm also. If W not in L, it halts at, see either case it halts. You see that? अगर आपको समझ में आया दोनों केसेस में halt हो रहा है तो दोनों केसेस में halt हो रहा है तो दोनों के लिए लॉजिक है, तो दोनों के लिए लॉजिक है, तो ये दोनों के ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए डिसाइडेबल है, इसलिए डिसाइडेबल. बट ट्यूरिंग मशीन के लिए क्या होगा? अगर ये ट्यूरिंग मशीन है, लेट्स से टीएम, ये ट्यूरिंग मशीन है, टीएम एक्सेप्ट्स डब्ल्यू, टीएम डजंट एक्सेप्ट. नो अब क्या प्रॉब्लम है? अगर टीएम एक्सेप्ट्स डब्ल्यू है तो ऑल सेट फाइनल, नो डाउट अबाउट इट. But TM does not accept W. Can you guarantee halting at non-final? No. So it may halt or never halt. Halts at non-final, or we don't know this one, may halt at non-final or never halt. So इनके लिए लॉजिक नहीं होता, इनके लिए लॉजिक नहीं होता, तो लॉजिक किसके लिए होगा? अभी S के लिए लॉजिक है, नो के लिए लॉजिक नहीं है. लॉजिक मे हॉल्ट एट नॉन फाइनल और नेवर हॉल्ट. तो लॉजिक नहीं बता सकते आप
तो इसके लिए, इसकी वजह से द मेंबरशिप जो है, तो एस डी यू डी फॉर ट्यूरिंग मशीन इट इज W बिलोंग्स टू L के लिए लॉजिक है, Q हॉल्स, W नॉट बिलोंग्स टू L के लिए वी डोंट नो। तो इनकी वजह से क्लियरली सिर्फ S के लिए लॉजिक बता सकते हैं हम, तो SDUD। Okay, loop is also possible. Even one case it is loop exists, then the whole is not having a logic. आप जाके टेबल में फिल कर सकते हैं। आप ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी सारे अगर प्रॉब्लम समझ में आया तो पहली टारगेट है आपको प्रॉब्लम समझना, जब प्रॉब्लम समझ में आया तो अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। तो मेरा रेगुलर नोट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ मिल जाएगा आपको। अगर इस सारे प्रॉब्लम्स को जानना है तो प्लीज रिफर माय नोट्स, यू कैन विजिट Deva Sir PW Telegram group and download the notes and check it. Can you understand? If you can understand, it's fine. If not, then just remember the table. Okay, these two are very important. That's why I discussed these two. And here, how many problems are there? There are total 8 rows, and each one there is one more. Halting, you know the answer. Then non-halting, its complement also there. So the halting and non-halting, you will get the same answer, but this may change. Remember, up to here, UD, the answer is same for the complement also. Okay. Done? Okay, now let's go to the some of the interesting questions. Okay, easy questions first. Suppose I have given you sigma is equal to a comma b. Now I'm asking the questions for this based on this. Question 1, the L is equal to pi. Question 2, L is equal to a comma b. Even language can be a comma b, right? L is equal to 4. L is equal to a star. Pi L is equal to a power n b power n. 6. A power n b power n a power n. I think I should go something else. A power m b power n a power k, where m is equal to n or n equal to k. 7. L is equal to a power n b power n a power n. And 8. A power n factorial. 9. Very famous problems, but you know, ten. इसी स्लाइड को समझने के लिए कोशिश करना, और हो सकता है आपको 1 दिन लगे और 10 दिन लगे, 1 साल लगे, बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन दिस स्लाइड। अगर इसमें हर प्रॉब्लम को समझने के लिए कोशिश किया है ना, तो बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, बहुत इंफॉर्मेशन। तो इस स्लाइड इज जस्ट लाइक यू नो एवरीथिंग फॉर योर चैप्टर। सारे कॉन्सेप्ट इस स्लाइड में इन्वॉल्व है, बट एक प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आपको आंसर करना है, तो इज एल डी मतलब डिसाइडेबल, एस डी यू डी और एन आर। तो आप इस तीनों में एक आंसर करना है, राइट। रेगुलर मुझे नहीं पता, सीएफएल नहीं पता, डीसीएफएल नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए वो, सिर्फ तीनों आंसर करना है, डी एस डी यू डी एन आर, बस तीनों आंसर करना है। तीनों में एक यहां आना चाहिए बस, एवरी लैंग्वेज के लिए।
फटाफट आंसर करो जो आपको पता है। मुझे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रेगुलर, फाइनाइट ये नहीं चाहिए वर्ड्स, ये वो गया पुराना चैप्टर्स में। इस चैप्टर में सिर्फ तीनों को पकड़ना है, कौन डिसाइडेबल है, कौन सेमी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल है, कौन नॉट आरियल है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर 1 to 10। ठीक है, नहीं आता, अनडिसाइडेबल बिल्कुल अलग क्लास है। ठीक है नागेश्वर, तो आपके आंसर यहां है। ठीक है, डिसाइडेबल अलग क्लास है, अनडिसाइडेबल अलग क्लास है। ठीक है, ये आरियल्स, ऑल आरियल्स मान लो, ये जो है ऑल लैंग्वेजेस मान लो। ठीक है, देखो यहीं पर देखो, और ये जो है ऑल रिकर्सिव लैंग्वेजेस। ठीक है, ये है। अब डिसाइडेबल कौन है, ये है डिसाइडेबल, ये सारे हैं ऑल डिसाइडेबल्स, डीस लिख देता हूं। ठीक है, ऑल डीस। और कौन है अनडिसाइडेबल, यहां से यहां तक ऑल अनडिसाइडेबल्स बोलते हैं हम। देखो यूडी डी ओवरलैप नहीं होता, अगर डी होगा तो यार यूडी कैसे होगा, यूडी होगा तो डी कैसे, ये अपोजिट वर्ड्स है ना, राइट। ये डीस है, ये डिसाइडेबल लैंग्वेजेस, डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है, ये अनडिसाइडेबल है, ये भी अनडिसाइडेबल है, ये भी अनडिसाइडेबल है। बट ये आरियल मतलब आरियल के अंदर डीस भी है और कुछ अनडीस भी है, यूडीस भी है। तो ये जो क्लास है ना, ये दिख रहा है ना यहां से यहां तक, ये जो है एस डी यूडीस है, ऑल एस डी यूडीस। ठीक है, ये क्लैरिटी पता होना चाहिए। और ये जो दिख रहा है ना, ये नॉट आरियल्स है। ये जो है ऑल एनआर्स, नॉट आरियल्स। एवरी बॉक्स क्लैरिटी होना चाहिए, आप किस लैंग्वेज को रिफर कर रहा है, किस लैंग्वेज को रिफर कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास डायग्राम। ठीक है, इस कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डी यूडी के अंदर नहीं होता, डी अलग है, यूडी अलग है। इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू क्लासेस एम्प्टी आएगा, एक लैंग्वेज भी कॉमन नहीं होता है यूडी एंड डी में, राइट। तो इस स्लाइड को प्लीज रिफर, कभी भी कुछ कंफ्यूजन मिला है इस स्लाइड को रिफर करना। ठीक है, फटाफट आंसर करो यार, बहुत सिंपल लैंग्वेजेस दिया है 8 तक, यहां तक बहुत इजी है आंसर करना। 9 एंड 10 थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो कौन कौन होगा, फाइनाइट लैंग्वेज हो सकता है, रेगुलर भी हो, डीसीएफएल भी हो, सीएफएल भी हो, सीएसएल भी हो, वो सारे क्या है डिसाइडेबल तो है ना। एक्चुअल आंसर क्या है इनका, एक्चुअल आंसर एम्प्टी मतलब फाइनाइट है। ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है बट रेगुलर भी है, राइट। ये भी रेगुलर है, इनफाइनाइट रेगुलर, ये एक्चुअल आंसर। बट मुझे ये नहीं चाहिए, ये फाइनाइट भी है, रेगुलर भी है, और ये लिखना जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट है बट रेगुलर नहीं है, ये डीसीएफएल है एक्चुअल आंसर। पर मुझे ये तीनों चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये डीसीएफएल नहीं है, ये सीएफएल है, ये सीएसएल है, ये भी सीएसएल है, राइट। ये 8 तक देखो, 8 तक ये सारे डीस है, ये भी डी है, डी है, मुझे डी चाहिए आंसर। ठीक है, ये जो 9 है, अगर किसी को भी सर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज रिकर्सिव का डिफरेंस बताना, ये लैंग्वेज आपको, रीजन है ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होता क्योंकि इनके लिए जो टेप होता है ना वो एक्सपोनेंशियल साइज चाहिए होता। क्यों, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसकी इक्विवेलेंट कंपेयर करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए बनाना, एनएफए को डीएफए बनाना और डीएफए को मिनिमाइज करना, ये पूरा प्रोसेस में टेप लीनियरली यूज नहीं करेंगे, हम नॉन लीनियर टेप यूज करेंगे। ये
ऑल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व होता है बट लीनियर बाउंड ऑटोमेटा से सॉल्व नहीं होता है। ए बिल्कुल डी है बट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज तो नहीं है, यह रिकर्सिव लैंग्वेज है। वैसे भी डी तो है, क्यों? इक्विवेलेंस फॉर टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज डिसाइडेबल, टेबल में है ऑलरेडी। एंड ये जो है बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, सेट है, उसके अंदर सारे रेगुलर लैंग्वेजेस है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और क्या लैंग्वेज है? ये डिसाइडेबल है क्या? तो इनके लिए 10th के लिए, ऑफ कोर्स 10th के लिए, स्पेशली 10th के लिए देखो L इज इक्वल टू ए स्टार दिया है, ठीक है, L1 मान लो, L2 इज इक्वल टू रेगुलर लैंग्वेज 1, रेगुलर लैंग्वेज 2, रेगुलर लैंग्वेज 3, रेगुलर लैंग्वेज 4। ये क्या है? सेट ऑफ सेट, मतलब ये ब्रैकेट, और ऑफ क्या है इसमें अंदर? ऑल रेगुलर्स। अब देखो यार, इनके लिए डीएफए है और फाइनाइट ऑटोमेटा है, बट एल के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। इनके लिए क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। क्यों नहीं यार? फाइनाइट ऑटोमेटा एक रेगुलर लैंग्वेज के लिए करेंगे यार, इतने सारे रेगुलर। फाइनाइट ऑटोमेटा का इनपुट होता है, सिंपल इनपुट होता है यार, एक रेगुलर लैंग्वेज इनपुट देना मुश्किल है। तो इनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, बट टीएम होगा, टीएम एग्जिस्ट। टीएम कैसे एग्जिस्ट होगा? देखो, अगर इनके लिए टीएम है, ये है वैलिड स्ट्रिंग्स बोलते हैं हम टीएम के लिए, वैलिड इन वैलिड मेंबर्स। एवरी वैलिड मेंबर के लिए लॉजिक है ना, क्या है लॉजिक? फाइनाइट ऑटोमेटा है, और फाइनाइट ऑटोमेटा होना भी जरूरत है, टीएम भी हो चलेगा। इनके लिए भी टीएम है, इनके लिए भी टीएम है, सबके लिए टीएम है। इसका मतलब सारे वैलिड मेंबर्स के लिए लॉजिक है। तो जब वैलिड मेंबर्स के लिए लॉजिक होता तो डेफिनेटली टीएम है। बट इनवैलिड क्या होता है? इनकी कॉम्प्लीमेंट देखो एक बार, समझ में आएगा। इनकी कॉम्प्लीमेंट L2 कॉम्प्लीमेंट ये होता है, ये रेगुलर से, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? अभी नॉट रेगुलर होना चाहिए, नॉट रेगुलर। इनकी कॉम्प्लीमेंट मत करना, ये ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट करो, नॉट रेगुलर 2, नॉट रेगुलर 3। सो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस यहां आएगा, तो ये होगा सेट ऑफ ऑल नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। ये कैसे दिखता बेसिकली? अगर किसी को भी और अप्लाई करना है नॉलेज इसके ऊपर, इसमें ऐसे दिखता है, एक ए स्टार होगा, दूसरा, ये स्ट्रिंग्स नहीं है, ये लैंग्वेजेस है। तीसरा क्या होगा? ए स्टार बी स्टार और ए प्लस बी होल स्टार, ये इनपुट्स है, राइट, ये मेंबर्स है। एक एक दिखेगा आपको लैंग्वेज, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये R4 होगा। ये लैंग्वेजेस मान लेना, क्यों? लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो मैं एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया बस। बट अगर एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, नाम लिखो, चलेगा इसमें। और नॉन रेगुलर कैसे दिखेगा आपको? नॉट रेगुलर मतलब ये होता है ऐसे a पावर n b पावर n, एक नॉट रेगुलर है। दूसरा नॉट रेगुलर हो सकता है a पावर n b पावर 2n, तीसरा a पावर 3n b पावर 100n, जो भी है, ये नॉट रेगुलर्स बोलते हैं हम। देखो, इनके लिए L2 कॉम्प्लीमेंट के लिए TM नॉट एग्जिस्ट। क्यों नॉट एग्जिस्ट? एनीबॉडी गेस? क्यों? इस नॉट रेगुलर के अंदर इवन नॉट आरएल भी आएगा। क्यों? नॉट आरएल भी एक नॉट रेगुलर है ना, अगर इसमें नॉट आरएल है उसके लिए तो टीएम नहीं होता। तो एवरी मेंबर ऑफ एल कॉम्प्लीमेंट के लिए लॉजिक नहीं दिखा सकते, बट एवरी मेंबर ऑफ L2 के लिए लॉजिक दिखा सकते। ये इसलिए वैलिड मेंबर्स के लिए लॉजिक है, इनवैलिड में यार एक इनवैलिड के लिए भी लॉजिक नहीं है। हम बोल सकते हैं इस पूरा लैंग्वेज के लिए लॉजिक नहीं है, इनके लिए लॉजिक है, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए लॉजिक नहीं है। तो ये होता है SDUD। क्या होता है? SDUD। एग्जैक्ट आंसर क्या है? SDUD। एवरी रेगुलर के लिए लॉजिक है, बट इनकी कॉम्प्लीमेंट में, इसकी सेट की कॉम्प्लीमेंट में ऑल नॉन रेगुलर्स आएगा, उनके लिए लॉजिक नहीं होगा, तो इसलिए SDUD। बिलोंग्स टू के लिए लॉजिक है, बट नॉट बिलोंग्स टू एल के लिए लॉजिक नहीं है। दोबारा बता रहा हूं 10 को, L इज इक्वल सेट ऑफ ऑल रेगुलर्स। इसी को एग्जाम में ऐसे भी होता है यार, याद रखना, R सच दैट R इज रेगुलर लैंग्वेज, ये शॉर्ट फॉर्म है सेट नोटेशन में, ठीक है। इसी को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिख देते हैं। और ये क्या है? बिलोंग्स टू एल के लिए लॉजिक है। क्यों? एवरी रेगुलर के लिए लॉजिक दिखा सकते हैं। इस बिलोंग्स टू एल मतलब एक इनपुट यहां पर, एक मेंबर यहां पर रेगुलर होगा। नॉट बिलोंग्स टू एल के लिए लॉजिक
नॉट एग्जिस्ट। क्यों? इसमें नॉट आरईएल्स भी बैठा होगा नॉट बिलोंग्स टू एल के लिए। जो नॉन रेगुलर बोलते हैं हम, नॉन रेगुलर बोलते हैं, उसमें नॉट आरईएल भी होगा। ठीक है, तो ये है। तो इसकी वजह से जो ये एल होता है एस डी यू डी। अनडिसाइडेबल तो क्लियर है, ये तो अनडिसाइडेबल है, बट एस डी यू डी। तो बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता, सर रेगुलर तो डिसाइडेबल है, सर सेट ऑफ ऑल रेगुलर्स कैसे डिसाइडेबल नहीं होगा? तो ये समझना होता है, वन रेगुलर मतलब उनके लिए डीएफए होगा, फाइनाइट मेटा होगा, बट सेट ऑफ ऑल रेगुलर्स ये पूरा सेट के लिए एक मशीन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या इसलिए एक एग्जांपल लिखा है यहां पर, कहा गया वो, ये देखो, यही समझना है, इनके लिए फाइनाइट मेटा होगा, बट L2 मतलब ये सारे लैंग्वेजेस इकट्ठा करके एक सेट के अंदर है, तो इस ब्रैकेट के लिए फाइनाइट मेटा नहीं होगा, तो इनके लिए फाइनाइट मेटा नॉट एग्जिस्ट। तो ये समझना होता, प्रॉब्लम R1 नहीं है, प्रॉब्लम ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के लिए फाइनाइट मेटा नहीं होगा, इसलिए L2 रेगुलर लैंग्वेज नहीं बनेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स REL बनेगा, इसलिए ट्यूरिंग मशीन है। ठीक है, थोड़ा इस स्लाइड को पढ़ लेना अच्छा से, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। नो, अरे दैट्स वेरी क्लियर राइट? डेफिनेशन, शुड आई राइट द डेफिनेशंस अगेन? सी, L has logic, means every member of L has a logic. L complement also has a logic. इसका मतलब होता है L is decidable। क्यों? वैलिड के लिए भी लॉजिक है, इनवैलिड के लिए भी लॉजिक है ना? और L के लिए लॉजिक है, L means वैलिड मेंबर्स ऑफ L, L has a logic, L complement has no logic। ये होता है L is SDUD। अगर L has no logic, don't worry about L complement, कुछ भी हो L complement, इसका मतलब होता है L is not RE। बस L complement देखना जरूरत ही नहीं है। अगर L के लिए वैलिड मेंबर्स ऑफ L is not having logic, why are you going for invalid of L? जरूरत ही नहीं है। L complement कुछ भी हो, आंसर L is not RE। तो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट? L complement कुछ भी हो, L complement के लिए लॉजिक है, नहीं हो फिर भी L is not RE। क्यों? L के लिए TM नहीं है, जब L के लिए TM नहीं होता L is not RE। और ये दोनों के लिए TM है, बट इनके लिए TM है, STM नहीं है, इनके लिए TM भी है, STM भी है। तो बात समझना, ठीक है? ओके, वर्कआउट। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये पुराना गेट क्वेश्चन है, कोशिश कर लिए कोशिश कर लीजिए आंसर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसाइडेबल? ओके, इस टाइप की क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। सिंगल चॉइस, जस्ट 2 minutes। Intersection of two regular languages is infinite or not? Whether a given context-free language, is it regular or not? Whether two PDAs accept the same language. So every statement के लिए reason पता होना चाहिए, why are you answering it? Okay, Lalit, why C 2 and 3? Decidable they asked. Okay, which of the following are decidable? पढ़ना चाहिए, you should know what is the question is about. Is it decidable or not decidable? Every statement is just like a bigger problem here. इसको प्रूव करने के लिए 2 घंटे लगेगा, 4 को प्रूव करने के लिए, बट हम स्टेटमेंट को समझ लेंगे बस। यस, नागेश्वर इज राइट।
Okay, what is the answer? Right answer is 1 and 4. They are decidable. That's a B. Oh, nobody. What happened? C and D. Nobody answered. Any issue? So first, whether the two intersection of two regulars is infinite. So how you do it? Let me help you. Is regular 1 intersection regular 2 equal infinite? ये है क्वेश्चन. तो ये डिसाइडेबल है नहीं है? एस नो दोनों के लिए लॉजिक है तो डिसाइडेबल है. तो इसको कैसे चेक करेंगे यार? रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर, इनके लिए कंपोजिशन एल्गोरिथम है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इज रेगुलर इक्वल टू इन्फिनाइट. क्यों? इस दोनों के लिए एल्गोरिथम है. इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस हमेशा रेगुलर है. इनके लिए रेगुलर, इनके लिए एल्गोरिथम है क्लोजर प्रॉपर्टीज में. इसको प्रूव किया है हम. ठीक है. अब एक ही रेगुलर लैंग्वेज हो गया, मतलब एक फाइनाइट बेटा है आपके पास. ये फाइनाइट बेटा इनफाइनाइट लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक करना है. यू हैव टू चेक दिस. assume that you have a finite beta. Is that finite beta accepting infinite language or finite language? There is an algorithm, like if the loop exists in the finite beta and that is reaching final state, तो definitely infinite language को accept होगा. अगर loop नहीं है, cycle नहीं है, तो infinite को accept ही नहीं करेगा. इनके लिए भी algorithm है. तो yes के लिए भी logic है, no के लिए भी logic है. S मतलब the finite beta has a loop that reaches final state somehow, and no matlab finite beta has no loop. Enough. We have an algorithm. That's why this problem is decidable. Of course both are decidable. In the exam they may ask this or this. This is an infiniteness problem, finiteness complement problem. Okay, decidable. Okay, first one is decidable. So this is, they asked about only decidable, so this is decidable. And whether a given context free language is regular. See, I am giving you PDA. I know what PDA does, CFL, but how do I know that PDA is accepting regular or not regular? Very, very difficult to prove. The given PDA is it accepting regular or not regular, but what we can prove, this PDA is accepting CFL, and there is no generalized algorithm to prove it. This is undecidable. Okay, we do not have any algorithm to check given context free, but we can check one thing. Given PDA, is it accepting finite or infinite? We have a logic. We can draw a dependency graph and we can do it, right? But context free language is regular or not, very difficult to check. That's why we fail to answer. I'll give you CFL, tell me is it regular or not regular? Very confused. You need to practice lot manually. Okay, no algorithm to check in the world whether the given CFL regular or not. Okay, only by looking at the problem we understand, we take care of it, but there is no generalized algorithm. Whether two PDAs accept the same language, this is an equivalence problem. What is another name? Equivalence. Equivalence for two PDAs, two CFLs, two context free grammars is undecidable. Okay, this is undecidable. And whether the given grammar is context free, this is decidable. Why? Anybody? Suppose I will give you two context free grammars. Sorry, I'll give you grammar. I'm giving you grammar. Some grammar I'm giving you. I have to check, is this context free grammar or not? I'm giving you, this is a given. Can we check? Let's say grammar G. Can we check whether G is CFG or not? Can we check that? Very simple. Just look at this grammar. If LHS and RHS are there, just check only LHS side. If this is only one non-terminal, answer is over. Then it is CFG. Look at an example I am giving you. Any grammar is given to you. Just look at this. Suppose something is given. What do? You don't wait for everything. Just look at three productions only. One non-terminal, but it is not only one non-terminal. Somebody else is there. This is not a context free grammar. Just you have to check this.
and grammar always have the finite number of rules, then your algorithm always stops. So given grammar, we are not asking is it generating context free language. We are not asking is the given grammar, is it context free grammar or not. तो आपको clearly समझना है whether given grammar is context free is different from if any question asked like this 5 whether a given grammar slight change generates context free language. Now this is not a grammar about, it's about language, because generating language, right? So this is undecidable, this is UD. Why? How do I know that grammar generating CFL or not CFL? We don't know. Checking the grammar is context free, easy, we have algorithm. But checking that grammar generating context free language, we don't have algorithm. So small change, that's it. Okay. Okay. So 1 and 4 are decidable. What is second option? Yeah, sure. What is second option is? Why are you asking second option? So this fifth one, if they ask whether the given grammar generates context free, then say undecidable. Okay. Second option, I say right, given context free language, it means, yeah, second I will modify, whether given CFL, what is given to you? CFL, how do you know which algorithm you will apply? Particular example you can check, but in general there is no algorithm to identify. Not only this, whether given CFG generates regular, same question but modifying the concept, that's it. Generates regular language, same. Whether given PDA accepts regular, same. If one is having algorithm, other will have an algorithm. Given PDA accepts regular, how do I know somebody else PDA? How can you check is it accepting regular or not? Okay. What else you can talk about this? That's it. Yeah. So all this, they are exactly same, undecidable. They are same. Don't assume they are different. They are exactly same, but CFL is given, CFG is given, PD is given, but the concept is same. The language you want to check regular or not. Okay. Very, very important. We can design PDF for regular language, but we cannot verify. Given, look at this, very important. We can design PDA to accept regular. We are not designing PDA here. Remember that. PDA is given already. But note 1, note 2, we don't have an algorithm to verify given PDA. We are not designing PDA. To verify given PDA, that accepts regular or not, that accepting regular or not. We don't have algorithm for that. Second one we are doing, looking at this statement, given PDA, is it accepting regular or not? Second statement you have to look at, not the first one. Many people, they don't know what they are looking at. They think that, oh, PDA accepts regular, why not? We can design. We are not looking for designing. We are verifying because it is given. So somebody else PDA, you need to apply the algorithm to check is it accepting regular or not. Very difficult. Infinite regular languages are there. Which regular language it is accepting? If it is accepting non-regular, how will you prove it is not regular? So very, very difficult. Okay. Done. Yeah. So look at, in this data, just theoretical lines, but anybody want to answer, they have to spend hours if they are not at concepts, right? You should learn the concept for each one. That's why go in a sequence. It may take only this chapter, undecidable chapter, looks like one textbook, but we don't have that much time to look at another textbook for only one
small topic for gate, especially gate. Okay, second. Single choice, 120 seconds. Oh, it's just about context free. Need to check context free. Can you solve using stack or not? Either deterministically, non-deterministically. Anything is fine. First one. No always exact reason in the exam. They may change the same question. Which of the following is true? And but options you may say deterministic, context free. Then you should know exact answer. They may use the same data, but options may change. All are context free? Great. Got it? Everyone is right, looks like. %. Somebody answered B also. What is B? Only L2, L3. So what about L1? L1, can you write this way? 0 power n, 1 power n, where, oh sorry, not n, mn, right? ij I will take. 0 power I, 1 power j, set I less than j or I greater than j. Even it is DCFL. How many of you know it is DCFL? So it is CFL definitely. And this is both are equal, right? It is also DCFL, so it is CFL. And I is equal to 2j plus 1. What do you mean by that? I is equal to 2j plus 1. 1j. So this is the problem is given to you. Now what do? This is 1 0 extra, then 0 2 power j and 1 j. And already you know this one is DCFL, so it's definitely DCFL. So this is CFL. And option D, I not equal to 2j. What do you mean by that? 0 power I, 1 power j. It means I less than 2j or I greater than 2j. It is also CFL. So all are CFL here. All are CFL here. Okay, you can write even context free grammar for that. Context free grammar for that, you can write context free grammar for all of them. Okay. Another simple one. Which of the following statement is false? Okay, I'll just convert this problem into MSQ. Let's see. I'm just converting it. I don't know what is MSQ, if this is MSQ or not, but I'm converting it. Okay. So multiple choice, 120 seconds. Start poll. Which one of the following is false? In the future they may ask true, then you should answer accordingly. PQR, and then other one is also PQR, but P not equal R. Very, very easy. Anybody answer?
These are PYQs. Already we made video, and actually, you can watch that video rather than, solving again. You should save your time. At any cost, watch that video. You will have lot of questions to, solve them and get the new approaches that I had discussed in the video. Every question, detailed discussion I have provided there. So it is very easy for you to, go through every question in last 10 to 15 years of the GATE. I'll provide some questions here to do the homework, but you watch that video, you will have a lot of other questions to practice. Answer? What is the answer? B. False we want, right? False. Where? Oh my God, what's happening? The false you need to choose, that is the D. No one? Everybody was answering me. Am I wrong here? We need to choose the false. Let's look into it. What is this? 0 star, 1 star, R star, and people were thinking P is equal to Q is equal to R. Did they mention it? No, right? Please, it's 0 power, it's 0 star. Okay, don't assume it is 0 power P, 1 power Q, 0 power. Here not mentioned P is equal to Q is equal to R. You cannot assume they are all same. Okay, the first mistake you are doing it. L1 is actually regular. If you know that, you can get the answers straight away. Okay, and this one, P not equal to R, only these two comparison is there, right? So it is equal to 0 star and 1 Q and 0 R, where Q, P not equal to R, I'm very sorry. 0 P, it's a 1 star and 0 power R, and P not equal to R. And only you have to check these two, right? These two are not equal to. That not equal, how will you get it? When one is there, when one is not there. So just check, when one is there, you can use a stack to compare. When one is not there, they are very together. They will generate one. Not equal means they will generate, any number of zeros. Easily they can do it. So it's very easy to identify it's a DCFL in fact. Now you need to find out L2 context free, true. Intersection of regular DCFL, so CFL, true. And complement of L2, yeah, DCFL complement is DCFL, so recursive, true. And complement of the L1 is regular, right? Complement of regular is regular, but the mention is not regular. That's why this is a false. Complement of L is context free, that's true, but you should not say not regular. Okay, so D. Okay, I hope similarly you just look at the questions. There are a lot of questions I have provided. Just assume they are homework now. Okay, when a lot of questions are there, assume they are homework, and all of them you can find in one video in a sequence. Again, you can find all of them in one sequence. Please watch. I am only there, I have explained, and I think unnecessarily we are wasting the time to discuss all these things. Every question is discussed in that video. So on the same channel, you go to the PYQ video for the TOC, you will get the solution for every question. Okay, and anybody ask something else, assume it is all homework questions. Even still there are a lot of questions are there. Okay, see, so far we have completed all the chapters like finite automata, PDA and Turing machine. At the end, undecidability and decidability concepts. Okay, and yesterday somebody was asking the doubt from some topic. Did I miss anything? Okay, if you have anything, please let me know. Otherwise we can wind up now, and please practice now entire TOC. Now you have the concepts, you have the approaches how to solve the questions,
and use these approaches. Even still some questions you are not able to interpret, you have the complete PYQ video. Please go and watch 8 to 10 hours video, you'll get. Okay, from Monday we will start compiler. In just 5 classes we will be completing the whole compiler. So by the next week you will be completing even compiler 2. Okay. Anything related? Which topic? Just search here, right? TYC PYQ gate Wallah. Just search like this. You are a computer science student, right? You should know that. TOC PYQ. Where do you want to search gate Wallah? Just use the gate Wallah term. Gate Wallah. Bas. In the YouTube, just search this video name, gate Wallah TOC PYQ. If you want to change the subject, CD PYQ. TOC if not coming, then theory of computation you write completely. That's all. You'll get that video, right? Okay. Yeah. Every subject you have the PYQ video will coming up again soon maybe. Then you can again join if we are going to have the PYQ series. But meanwhile, you just practice before we come again. Yeah, thank you everyone and take care. See you on Monday with new subject compiler design. Take care. Bye bye.